Yes, hello everyone, welcome on YourPedia platform. I hope you all are fine, preparing well. So guys, today I'm here in front of you with very important job notification related to NABARD, National Bank for Agricultural and Rural Development. It's obviously it's work under the Ministry of Government of India. Okay, so fully owned by Government of India, and there are some vacancies in NABARD for graduate, whether they are BA, bachelors or bachelors in art or bachelors in technology, BTech or BSc. Okay, any bachelor course if you have did, you are eligible to apply for some of the positions. And yes, some other specialized graduate courses students, they are also eligible, like in fisheries, agricultural, those students are also eligible. And guys, let me tell you, these positions are not like that ki some special preparation. Obviously, like the pattern is slightly different, you need to cover that content, but it is not like that the student who are preparing for banking sector, those only will be able to crack this particular examination. It is not like that. If you will sincerely prepare for next 2-3 months, guys, easily you will be able to crack this examination, because I hope the engineering student, whether they belong to mechanical, civil or any particular domain, engineering student comparatively they are having edge. They are good in aptitude and reasoning. Okay, English also they are average, but if you will work on that, easily they can cover that part also. And other than that, some questions you are going to face related to rural development, okay, and agriculture also. So those parts, even some students who are preparing for banking sector, okay, and even if you are not preparing, you need to cover that part of rural development and agriculture. Okay, so yes, the student who are preparing for banking sector, they need to cover, because they are good in aptitude reasoning, they need to cover that additional subject, additional topics. But the student who are actually even not preparing for banking sector, they also can try for this particular examination. Okay, but yes, next 2-3 months sincerely you need to prepare for this exam. So let me start discussion with you. So the applications positions are for the post of assistant manager. Okay, assistant manager का position है बच्चों, assistant manager grade A. Okay, चलिए, so the process, online process started from 18th July and the last date to apply is 7th August. 7 अगस्त से पहले पहले बच्चों आपको अप्लाई करना है. 18 अगस्त से प्रोसेस शुरू हो चुका है. Okay, obviously you need to read this notification, detailed notification before going to apply. Phase 1 examination, they are going to conduct preliminary phase 1 examination online. They are planning to conduct that examination on 7th September. Okay, so August, September, you are having 2 months to prepare for phase 1 examination, and yes, I think phase 2 you will again get 1-2 months. Okay, so 2 examinations they are conducting, phase 1, phase 2. I am going to discuss with you the entire syllabus, what you need to prepare, don't worry about that. Chali, so these are the positions, guys. The assistant manager, RDBS जनरल. सो जितने भी जनरल का पोजीशन है, जनरल, ये जो असिस्टेंट मैनेजर जनरल है, असिस्टेंट मैनेजर जनरल, दीज आर फॉर एनी ग्रेजुएट. ओके, एनी ग्रेजुएट, दो स्टूडेंट्स दे कैन अप्लाई, एंड द मोस्ट ऑफ द पोजीशंस आर इन दिस ओनली असिस्टेंट मैनेजर जनरल. सो 33 जनरल के लिए है, 12 एससी के लिए, 6 एसटी के लिए, 21 आर फॉर ओबीसी एंड 8 आर फॉर ईडब्ल्यूएस. टोटल वैकेंसीज आर 80. 80 अच्छा नंबर है बच्चों, यू कैन ट्राई फॉर दिस. Any graduate can try for AM general, but other than that, some specialized assistant managers are also required, like in agricultural, fisheries, forestry, land development, soil science, plantation, horticultural, civil engineering, एक vacancy है, environmental engineering, finance, computer information technology, agri marketing, development manager. So total positions are 161. Total positions कितनी है बच्चों? 161, out of which the 80 are for जनरल, मीन्स ओपन फॉर ऑल एनी ग्रेजुएट. चलिए, सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं बच्चों. दी सम मोर डिटेल्स यू कैन गेट अबाउट द रिजर्वेशन. ओके, दीज आर सम ऑफ द रिजर्वेशंस फॉर पीडब्ल्यूडी, दे ऑल्सो कैन चेक. ग्रेड ए, यस. सो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट important information, guys. Obviously, if you are interested, you need to have some more detailed reading you need to go through. You need to go through this particular notification. Okay, eligibility, because I'm only here discussing with you the important content so that you will be able to apply timely. So eligibility criteria क्या है बच्चों? You can check it here. So let us move to here. Yes, eligibility criteria, academic qualification for general, assistant manager general. So bachelor degree in any subject with 60% marks for a general category student, and SC, ST, PWD, the percentage required is 55% or more. Okay, post graduation students, they can also apply. If you are having MBA, PGDM, then you can also apply with the minimum marks 55%.
ओके चलिए, सो एग्रीकल्चरल के लिए ऑब्वियसली बीटेक इज बैचलर्स इन रिक्वायर्ड इन एग्रीकल्चरल, फिशरीज के लिए बैचलर्स इन रिक्वायर्ड इन फिशरी साइंसेस, सिमिलरली फॉरेस्ट्री के लिए बैचलर डिग्री इज रिक्वायर्ड इन फॉरेस्ट्री, लैंड डेवलपमेंट बैचलर इज रिक्वायर्ड इन एग्रीकल्चरल, soil science, okay, plantation horticultural, again you can check the eligibility criteria. Civil के लिए BTech required in civil, environmental BTech required in with the environmental science, environmental engineering, finance you can check, okay, computer information, yes, for that BTech is required in computer science. So computer science engineers they can apply for assistant manager computer information technology, like this, okay. So yes, there are some of the students who are doing MTech in some of the IITs like IIT Guwahati or any other IIT. They also can target these kind of positions. Okay, rural development में आपको rural का तो कुछ idea होगा ही. What are the different sectors of rural development? So I hope you are having some idea about that. So reasoning, this aptitude, if you will prepare easily, you will be able to crack this examination. So let us, yes, age criteria. The minimum age is 21 and the maximum age is 30 years. तो मिनिमम एज 21 होनी चाहिए बच्चों. अगर आपने 20 साल में ग्रेजुएशन कर लिया है देन यू आर नॉट एलिजिबल. मिनिमम एज 21, मैक्सिमम एज 30 इयर्स. सो इफ यू बॉन्ड आफ्टर दिस, आप इसके बाद आपका जन्म होना चाहिए, ओके, और इससे पहले होना चाहिए. एक साल, सॉरी इससे पहले नहीं, आपका जन्म होना चाहिए इससे पहले 1/7/2001, ओके, 1/7/2001 से पहले एंड 2 जुलाई 1992 के बाद, then only you are eligible to apply. But yes, further there is a relaxation of 3 years for OBC and 5 years for SC ST, okay, and 10 years for what, PWD category students, okay. The all benefits are there as per the central government rules. So selection procedure guys, they are going to conduct 2-phase examination. So in phase 1 में they are going to test your understanding related to the technical, reasoning, English language, computer knowledge, quantitative aptitude, decision making, general awareness, okay. So 20 questions you are going to face from these subjects, these areas, okay. 20 questions from some of the topic you are going to face 10 questions, 40 questions, economics and social issues with focus on rural India, 40 marks. तो ये मेन टॉपिक बन जाता है जो आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा. ये जनरल मेन टॉपिक्स है जो हर एग्जामिनेशन में रहते ही रहते हैं, ओके. एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. 80 मार्क्स का जो है आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, okay. Agricultural and rural development with emphasis on rural India, okay. So this part also you need to prepare. This 7th part and 8th part, these particular column part you need to prepare 80 marks, okay. So total questions you are going to face 200 marks will be 200 and time they are going to give you 2 hours 120 minutes, okay. तो 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चंस को आंसर करना है और 200 मार्क्स सिक्योर करने हैं, okay. So based on the merit list, phase 1 they are going to call in the ratio of 1:25. 25 गुना बच्चों को, जितनी भी वैकेंसी है, जैसे हमने देखा जनरल में 80 वैकेंसी है तो 80 गुना 25, ओके, तकरीबन 2000 बच्चों को दे आर गोइंग टू कॉल फॉर द phase 2 एग्जामिनेशन. So 80 are the vacancies in general, assistant manager general, okay. In that, suppose some students are applying, so out of that they are going to qualify 25 times. So 25 times the student they are going to shortlist for the phase 2 examination. उसके बाद 3 times they are going to shortlist for the interview. तो interview के लिए 1/3 रहेगा, 3 गुना बच्चों को interview के लिए बुलाएंगे बच्चों after phase 2 examination, okay. So this is the phase 2 examination guys, जिसको mains बोल रहे हैं, phase 2 or mains exam. So in that mains exam there will be 2 paper. Paper 1 will be for English language, online descriptive type का पेपर होगा बच्चों. It will be kind of descriptive type. Total question will be 3, 90 minutes का पेपर होगा और मार्क्स होंगे इसके 100, ओके. बाद में डिस्कशन करेंगे वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं, वो कोई पैसेज आ सकता है, इट मे बी एनी अदर थिंग आल्सो, बट हियर आई थिंक दे प्रोवाइडेड सम सिलेबस आल्सो. वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड वी विल ट्राई टू डिस्कस व्हाट पार्ट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस phase 2 English, okay. So 3 questions they are going to face, 100 marks and 90 minutes. Similarly paper 2 में क्या होगा, पेपर 2 में there will be ESI and ARD. ESI and ARD से पूछेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 30 एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे. ये वही है बच्चों, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ये एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो हमने पहले पार्ट पढ़ा था, जो 40 पार्ट था, 40 मार्क्स था, जो फेज 1 में जो इन्होंने पूछा था वही पार्ट है, इकोनॉमिक सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस, ओके. सो 30 क्वेश्चंस रहेंगे आपके 50 मार्क्स के, 30 मिनट्स एंड 6 क्वेश्चंस रहेंगे आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप
50 मार्क्स 90 मिनट्स। ओके, सो टोटल अगर हम इस पेपर 2 का वेटेज देखें तो 100 मार्क्स का ये है, 100 मार्क्स का ये है, तो पेपर 1 इज ऑल्सो फॉर 100 मार्क्स, पेपर 2 भी कितने का है, 100 मार्क्स का है। ओके, सो ये जो मेंस एग्जामिनेशन था जनरलिस्ट के लिए, जनरलिस्ट असिस्टेंट मैनेजर जनरल, assistant manager general, but there are some assistant manager required in fisheries also, environmental also, तो उसके लिए पेपर 1 तो सबके लिए कॉमन है, बट पेपर 2 विल बी डिफरेंट। देखिए पेपर 2 क्या होगा, डिफरेंट होगा, एंड यू कैन चेक इट हियर, स्पेशलिस्ट, मेन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट मींस असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर साइंस, समथिंग लाइक दैट। सो इन दैट कैटेगरी पेपर 1 विल बी सेम इंग्लिश, बट पेपर 2 दे आर गोइंग टू आस्क 6 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, ऑफ विच कैंडिडेट डिस्क्रिप्टिव टाइप, और इसमें क्या होगा, स्ट्रीम सब्जेक्टिव पेपर, दैट इज ऑल्सो गुड गाइज। अब सपोज यू आर फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, देन फॉर पेपर 2 यू नीड टू प्रिपेयर योर स्पेसिफिक स्ट्रीम ओनली, सो दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू योर स्पेसिफिक स्ट्रीम। Obviously the paper will be of descriptive type only, 6 questions they are going to ask, but related to your specific stream, okay, agricultural, computer science, environmental, civil, anything। okay, चलिए, so mains examination for the post of Rajbhasha, okay, I think they mentioned some post for Rajbhasha also, तो राजभाषा के लिए भी this is the main examination pattern, you can check। इंटरव्यू होगा 50 नंबर का, तो पेपर 1 कितने का था, 200 मार्क्स का, पेपर 2 इज ऑल्सो 200 मार्क्स, जो इंटरव्यू है ये है 50 मार्क्स का, तो टोटल जो बन जाता है वो 450 मार्क्स बन जाता है। They are going to prepare merit based on the total 450 marks only, 450 marks के basis पे ही total merit बनेगा बच्चों। So clearly they mentioned they are going to call 25 times for the phase 2 examination, 3 times for the interview, you can check। okay, there will be negative marking also guys, 1/4 का क्या होगा, negative marking होगा। cut off in phase 1 and phase 2 may be applied in 2 stages on score of the individual test on total score। सो टोटल स्कोर में कट ऑफ आपकी फेज 2 की भी देखी जाएगी। चलिए, तो मिनिमम मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे सो दैट दे विल कॉल यू फॉर द फेज 2 एग्जामिनेशन। सिलेबस, लेट अस रीड सम डिटेल्स अबाउट दिस सिलेबस यू नीड टू कवर। पेपर 1 के लिए इंग्लिश उन्होंने दिया हुआ है, essay, pressy writing, comprehension, business office, correspondence। The paper of English shall be framed in a manner to assess the writing skill including expression and understanding of the topic। okay, so I think they are going to ask you much questions related to that only, essay, pressy writing, comprehension। okay, पेपर 2 जो है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज के लिए भी उन्होंने टॉपिक आपको दे दिए, व्हाट आर द टॉपिक्स यू नीड टू कवर फॉर इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, एंड व्हाट आर द टॉपिक्स यू नीड टू कवर फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, सो देन आई फील easily you will be able to cover those things। I think the student who are from civil engineering background they have advantage, because I think some part they are having they know related to soil and water, water resources, तो इनमें थोड़ा सा उनको अंडरस्टैंडिंग रहता है एज कम्पेयर टू अदर इंजीनियरिंग डोमेन स्टूडेंट्स। ओके, चलिए, तो प्लांटेशन, एनिमल हस्बेंड्री, बट अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो दे कैन कवर दीज पार्ट्स। rural development, so clearly they mentioned the syllabus guys, pre-requirement training, PRT for SC/ST category students, so I think they are going to provide some training also to the SC/ST category students, they can refer to this। 9 अगस्त को email आएगा, and then you can go through that training before appearing in the exam। okay, so some forms also they are provided if you want to go through this pre-examination training। chaliye, so you can fill this form। okay, so different cities are there where you can appear for your phase 1 examination, तो examination centers are there different cities में, different states में, you can check अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, मेरे ख्याल से most of the states they covered, सारी के सारी states उन्होंने cover किया है बच्चों। तो and in every states there are so many centers they created, बहुत सारे centers उन्होंने create किए, तो I think easily some center you will be able to find close to your near to your hometown। So guys, this is a good opportunity phase 2 के लिए भी, these are the cities, centers हैं। phase 2 के लिए comparatively centers are less because they are only going to call 3 times। अगर 80 वैकेंसी है so they are going to call 240 students, 240 बच्चों को कॉल करने वाले हैं असिस्टेंट मैनेजर जनरल के लिए। so 240 के लिए they are not going to provide that much big large number of centers, so the centers are limited for phase 2 examinations। okay, सो इंटरव्यू के लिए भी क्या होगा, फ्यू अबाउट सेंटर्स, यस इंटरव्यू भी कुछ सेंटर्स पे हो सकता है, बट दिस टाइम दे हैव नॉट मेंशन द सेंटर्स। एप्लीकेशन फीस SC/ST PWD देयर इज नो एप्लीकेशन फीस, इंटीमेशन चार्जेस हैं 150 के। ओके, बट फॉर ऑल अदर कैटेगरीज जनरल, OBC, EWS द एप्लीकेशन फीस इज 650।
150 intimation charges, total are what? The 800 rupees you need to bear, exclusive of application GST. तो मेरे ख्याल से इसमें GST भी लग सकता है बच्चों, तो GST मिला के कुछ और अमाउंट बढ़ सकता है. पे स्केल जो इनका है, अभी पे बैंड जो ऑफर कर रहे हैं, दैट इज इन द रेंज ऑफ दिस 28,152 दिस पर्टिकुलर पे बैंड, बट दे मेंशन की द अप्रोक्सीमेट सैलरी विल बी क्लोज टू 70,000. अभी का जो एट प्रेजेंट इनिशियल मंथली ग्रोस एमोल्यूमेंट्स आर अप्रोक्सीमेटली 70,000. ओके, तो 70,000 के आसपास का सैलरी इसमें बन जाता है. अदर बेनिफिट्स एज पर द गवर्नमेंट रूल्स दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू. ओके, न्यू पेंशन स्कीम्स के अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, ग्रेजुइटी के या जो भी ऑप्शनल ग्रुप टर्म इंश्योरेंस प्लान है, वो सारे के सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे. Obviously, you need to apply through online process only. There is no offline process, guys. You need to apply through online process. Application registration, payment of application, photograph, signature. Yes, you need to upload some documents, and they provided the description also. Photograph किस size का होना चाहिए, signature किस size का होना चाहिए. Obviously, you need to refer to this, guys. Before going to apply, आपको इसमें डिटेल में डिस्कशन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, so that timely and effectively you will be able to apply. चलिए guys, so these are the important information I discussed with you. So if you are interested, please apply timely. Don't feel कि yes, I'm not good in that ruler part or the social or economic issues. That part I feel you will be easily able to cover in 15-20 days if you will sincerely prepare. Other parts, if you feel you are good in aptitude and reasoning, then you need to appear for these kind of examination. Getting some good job, government job is a kind of dream, okay, and if you are getting, it's a very good opportunity, okay. So please apply timely if you are interested. For any further query, doubt, you can shoot your query in the comment section. Thank you very much. Keep preparing, and yes, you can subscribe to our YourPedia YouTube channel for getting regular job notification. Thank you. Keep preparing.